Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti. I hope you guys are doing absolutely great. So today for this video we are going to deal with yet another chapter from grade 7 science, that is transportation in animals and plants. So this is going to be a super amazing session because in this session we are going to learn about transportation in animals and plants, whether it's the transport of water or minerals or food. Okay, so now let us begin with the session. But guys, before beginning, let me tell you that the link for the doubt solving form is in the description box, so do not forget to check it out. You guys are going to have a lot of fun, because if you write me your doubts, I'm going to solve them through some of the other medium like doubt solving videos. And guys, the link for the suggestion form is also in the description box. If you have any suggestion regarding my teaching, or if you want any videos of your choice, you can write me down in the suggestion form provided below. And with that note, the session notes is also in the description box, and with that, the quiz link is also in the description box. So guys, do not forget to check out the description box. It's going to be super fun to check it out. So now let us begin. So now beginning with the chapter, link is provided in the description of the doubt solving form, suggestion form, notes for this session, as well as the quiz for this chapter. Booster quiz will be there of 5 to 7 marks. Now the circulatory system. First of all, in transport, let us learn about humans. Transport of blood. Blood is circulating all around your body, and that is transporting through what is the through what exactly it is happening. So it is happening through the circulatory system in our body. Guys, remember, a very important chapter with a very important topic this is. So blood is the very first thing involved in the circulatory system, that is circulating all around your body, through all the parts of the body. So blood is actually a tissue. It is a type of tissue. Now what is a tissue? Many of you may ask. So tissue is a group of cells. Now what is a cell? Many of you may ask. So cells is the basic structural unit of our lives. So actually we are humans. We humans are organisms. We are a living organism. Organisms, the name suggests, we are made up of organ systems. Organ systems such as digestive system, circulatory system, excretory system, okay, reproductive system, all these are organ systems. Organ systems are made up of organs. Okay, organ systems are made up of organs, while your organs are made up of tissues. Now, tissues are made up of another thing, that is cells. तो cells are the basic, मतलब cells से ही सब बने. cells से tissues बने, tissues से organs बने, organs से फिर आपके organ systems बने, organ systems से एक organism बना. So your cells are the basic structural of your life. Now एक बिल्डिंग को bricks बनाते तो आपकी जो बॉडी की बिल्डिंग है, they are made up of cells. Now what is tissue? ये मैंने बताया, इसको देख के तो आपको पता चल ही होगा. Tissues are a group of cells. Tissues are a group of cells, and a group of tissues make up organs, and a group of organs make up organ systems. So guys, your blood is also a fluid tissue only. Now your blood, as you guys must know, blood is red in color. Why is it so? It is due to hemoglobin. It is due to hemoglobin in blood. So your blood has a RBC known as hemoglobin. Okay, so this hemoglobin blood, this is a red pigment. It is red in color, so it makes your blood look red. Like in plants, the green pigment chlorophyll makes them look green. Such as in the same way, I will say, in humans also, the red pigment known as your hemoglobin make your blood look red. Now it is red in color, and it flows through a network of tubes in whole body called blood vessels. Now in a body that have lot of tubes, as you can see in this picture as well, there are lot of tubes here, a lot of tubes, okay, that are your pipelines sort of structure. What they actually do, they transport blood. Those are known as your blood vessels. Blood is pumped to every part of the animal by heart. Now heart is something that pumps up. Okay, the function of heart is to pump. You must have once you keep your hand on your on your chest or where your heart is located, you would feel the heartbeat. So your function of your heart is to pump, and that is only the thing. Key point here, that blood is pumped to every part. Blood is going to be pumped to every part of the body through the help of heart only.
Now people, moving on, blood consists of 4 components: plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Now what are plasma? Plasma is something that is inside your blood, okay, that is your fluid portion of your blood. Okay, now RBCs, that are also known as red blood cells. RBCs are only red in color, red blood cells. Then your WBCs, soldiers of your body, WBCs are your white blood cells. And platelets, that leads to clot formation. Plasma is a liquid, while RBCs and WBCs and platelets that float in it. Now what is here, like ये एक example ले लेते हैं. There is a river, okay, there is a river and inside the river boat is floating. Then inside the river boat is floating, a wooden log is floating. In the same way people, the river here is plasma. यहाँ पे जिस river की मैं बात कर रही हूँ, that is your plasma. Inside this plasma fluid, your boat is RBCs and your wooden logs is WBCs and platelets as well. Okay, let's take fishes as platelets. They are floating above it. Are you guys clear with this? Now let us move on to the next portion, that is learning about each of them in even more detail. So plasma, what exactly it is? The fluid part of the blood is called plasma. In your blood, the fluid means the liquid part that you have is known as plasma. Now what are RBCs? Moving on. So one type of cells that are red blood cells which contain a red pigment called hemoglobin. So RBCs are those cells which have the red pigment known as hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells as well. What is it going to do? It is going to bind with oxygen. It is going to bind with as such we can take as an example as you are telling someone, will you be my friend? We will together do something very interesting. The same way hemoglobin and oxygen do the same. We can be together and rock the session, right? They are something like this only, and then they transport your blood to all the parts of the body and ultimately to all the cells also. That is a basic component. It does need it. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. Now hemoglobin is transporting oxygen to all the parts of the body and ultimately to all the cells as well. Now without oxygen we cannot live, and without hemoglobin also, that means we cannot live, because if even we are inhaling oxygen, what will be the use of it? Okay, if we cannot use it, what will be the use of it if we cannot utilize it? The presence of hemoglobin makes the blood appear red, and here your question is answer. Blood is red because of hemoglobin, that is the red pigment present in blood. Red pigment means red in color. Now guys, another important point, that is about WBCs and platelets. So WBCs, that are your white blood cells. Here it goes. So the body also has white blood cells which fight against germs that may enter our body with our food, with our, while we inhale. So what are they going to do? They are going to just fight with those germs like a Shaktiman type, right? They are going to fight with those germs in a Shaktiman type, and he'll be like, अब तो तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा, सच्चाई दुनिया में आ चुकी है ना guys? So the same way, so they are the soldiers of our body. They are going to be they are super important components of your cells as well. Now आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आप जब गिर जाते हो, sometimes when you fall, तो क्या होता है, जैसे ही आप गिरते हो ना, तो आपको चोट आ जाती है, फिर वहाँ से ढेर सारा खून निकलने लगता है. The blood keeps on flowing after that. Whenever you fall, you get hurt, you are injured, then what is happening? Your blood is flowing. Okay, your blood is flowing out of your body in that particular injury, out of that particular injury or wound, you can say. So after some time you observe the same injury, what is going to happen? The blood is going to stop flowing. The blood will stop flowing. Instead there will be a clot built up. एक clot की formation वहाँ हो जाएगी. Now what is going to be that clot? That clot is only your platelets. So platelets is the component of blood that leads to clot formation, so that ज़्यादा से ज़्यादा खून ना टपक जाए, because guys we do need blood, right? और अगर हम ऐसे
चोटें तो आती रहती है ज़िंदगी में, हम गिरते रहते हैं ना, और गिरते रहते हैं, तो अगर गिरते रहेंगे एंड देन द ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग, देन जस्ट इमेजिन पीपल, आपके बॉडी में जितना ब्लड है वो तो इंजरीज के थ्रू ही आपके बॉडी से निकल जाएगा. सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. सो दैट इज़ वाई platelets lead to clot formation, and that's super important as well. Now let us learn about blood vessels. So first of all, what are blood vessels? So blood vessels are utensils. Blood vessels are utensils. You have to take it as utensils. ठीक है, वो utensils क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाते हैं. They are transferring food. Now that food that we are talking about is not any food, but that is your blood, people. So blood is going from one part to the other through your tubes known as blood vessels. Now blood vessels, here I have explained it using a chart of two types, arteries and veins. They have different functions as well. Now let us learn about them. So what is the function of arteries first of all? So arteries carry blood rich in oxygen to all the parts of the body. They are going to only carry blood that are rich in oxygen. वो खून जिनमें ऑक्सीजन है, they are going to transfer it to all the parts of your body. And the second thing is, it does not possess any valves. So there are no valves in the arteries. But then coming on to veins, people, they carry blood rich in carbon dioxide to all the parts of the body. मतलब उनका उल्टा हुआ. If arteries are saying oxygens are my best friend, then veins will be like, okay, then I'll make my best friend carbon dioxide and I'll help him. So इसी तरह से help होती है. And then arteries are saying, I do not keep bad things like wells. Then veins say, oh, it's not really bad, I do have wells. So your veins have wells which prevent the backflow of blood. Okay, which are going to prevent the backflow of blood, and that's really good and helpful. Now guys, here goes the slide, so ignore this. First of all, the number of beats per minute is called pulse rate. Now the number of beats per minute, just hold up your hand, hold up the hand, जिसको आप कलाई बोलते हो, है ना, hold up that portion. You are going to feel some beats. वहीं पे नहीं, in your body a lot of portion are going to beat, except heart. Heart is also going to be beat of course, but why am I saying except heart? Because heart ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे beating होती है. At places of pulse, वहाँ पे आपका pulse होता है, वहाँ पे भी beating होती है. तो उन beating को, वो जो पल्स की बीटिंग होती है, तब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, अगर एक मिनट में अगर वो लोग 50 बार बीट किए तो दिस इज दैट बीटिंग रेट. ओके, पल्स का रेट, पल्स रेट इसको बोला जाता है, बीटिंग रेट नॉट, बट एक्सेप्ट विल से पल्स रेट. These are extremely thin blood vessels that connect arteries to veins. Now these blood vessels only are going to connect pulses. Pulses are those which are going to connect arteries to veins. This allows substances to pass from blood into the body cells, and also from body cells into the blood. The exchange of substances like food, oxygen, carbon dioxide, etc. between the blood and the body cells take place through capillaries. Now what are capillaries? So here that was the definition. Now these capillaries, the places where exchange happens, exchange of, let's take it as oxygen, carbon dioxide, food, etc, etc. Okay, so what are they going to do is, they are going to take place, the exchange are going to take place in the capillaries. वो जगह कहाँ लेंगे, मतलब अच्छा आप खाते हो, पर किस चीज़ से खाते हो, तो अपने मुंह से खाते हो. सो दैट इज़ वेर योर च्यूइंग इज टेकिंग प्लेस. आपका चबाना जहाँ जगह ले रहा है, दैट इज़ अ माउथ. इन द सेम वे द एक्सचेंज इज द प्लेस वेर एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इज योर कैपिलरीज. पीपल, आई होप यू गाइस आर सुपर क्लियर विद दिस. नाउ लेट अस मूव ऑन एंड लर्न अबाउट द हार्ट. नाउ हार्ट के बारे में एक मिथ काफ़ी लोगों को रहती है ना, कि द शेप ऑफ द हार्ट इज़ दिस वन, द शेप ऑफ द हार्ट इज़ दिस वन. तो बट शेप ऑफ द हार्ट यू कैन जस्ट लुक इट गाइस, आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ऐसा शेप है. लाइक अगर आप मेरे जैसे हो ड्राइंग में एकदम डब्बे, तो नहीं कर पाओगे. सो ये है शेप हार्ट का, और ये कोई से भी एंगल से ऐसा शेप नहीं है, कोई से भी एंगल से शेप नहीं है. तो उस मीथ को अपने दिमाग से निकाल के हटा दो, बिकॉज गाइस दैट इज टोटली फॉल्स. नाउ लेट अस मूव लर्निंग अबाउट द हार्ट. So, the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances which... Now guys, एक बात सोचो, आप ना एक ही काम हर रोज़ कर रहे हो, एक ही काम हर रोज़, every day you are just studying. अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी हो स्टडी में, तो आफ्टर 6 months you will be like, अब नहीं पढ़ना, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ.
हार्ट को भी ऐसा होता होगा ना, वो पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, फिर उसको कभी मन होता है कि अब मैं ब्रेक लेता हूँ। तो आपका क्या होगा, इफ हार्ट विल स्टॉप पंपिंग, इफ हार्ट विल स्टॉप बीटिंग, देन यू गाइस आर गोइंग टू डाई, है ना। सो जस्ट इमेजिन दैट हार्ट कितना ज़्यादा फेथफुल पंप है ना, हाउ फेथफुल इज इट, इट इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप पंपिंग, लेकिन फिर लाइफ के एक एंड मोमेंट पे वो बंद कर देता है पंपिंग ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न पंपिंग बंद हो जाती है। सो नाउ हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी with its lower tip slightly tilted towards the left. तो सब बोलते हैं ना कि heart is exactly on the left side of your body, so no, that is not true. Heart is tilted on something sort of to the left side of your body, ठीक है। Heart completely left में situated नहीं है या फिर located नहीं है, it is slightly tilted towards the left. So please do take out this myth from your mind. Now guys, एक काम करो, take your hand now, just fold all your finger inwards, means you have to make a fist. आपका फिस्ट कितना बना, just tell me कितना बना आपका फिस्ट। आपका फिस्ट जितना बनाना उतना ही साइज होता है एक हार्ट का, मीन्स उतना कंप्लीटली नहीं बट रफली वी कैन से। रफली का क्या मतलब होता है, एक तरह से अगर किसी चीज़ का आंसर 15 है तो आप बोल सकते हो रफली उसका आंसर शायद हो सकता है 14.9। सो ये रफली हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं लेकिन उसके बहुत नज़दीक। उसी तरह हार्ट भी आपका फीस जैसा ही है, कंप्लीटली नहीं बट बहुत ज़्यादा नज़दीक उस साइज़ के। ओके, नाउ moving on people with the next slide, here it goes. So what will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? So guys यहाँ ध्यान से दो, आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या दो टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स। ना आर्टरीज are going to carry blood rich in oxygen while veins are going to carry blood rich in carbon dioxide, because उन दोनों ने तो अपने फिक्स फ्रेंड्स बना लिया। arteries said we are going to do friendship with oxygen, we are going to help them, and then veins said that no, we are going to help carbon dioxide. so हो गया उनमें फ्रेंडशिप। तो now guys what is going to happen, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के कहीं पे भी कांटेक्ट हो गए, मिक्स हो गए, ये ना लिक्विड जैसा, एक लिक्विड दोनों दूसरे लिक्विड में अगर मिक्स हो जाता है तो क्या होगा, ये तो सही नहीं होगा ना। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स हो जाएंगे, दिस इज टोटली नॉट करेक्ट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, क्या इसके लिए, इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि फिर अगर वो मिक्स हो गए तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर आर्टरीज बीन को धोखा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट पीपल। सो यू कैंट इवन थिंक ऑफ इट नाउ to avoid this from happening, और ये ताकि ना हो, in order to avoid this from happening, the heart has 4 chambers। तो इसके लिए तो भाई क्लैप बनता है, बिकॉज नेचर ने हमें कुछ ऐसा बनाया है कि हमारे बॉडी में हर एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया गया है, एक साइंटिफिक वे में, है ना। हर एक स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है। भगवान ने हमें जैसा बनाया, वी आर सुपर ऑसम एंड वी ह्यूमंस कैन डू एवरीथिंग, राइट। ना हमारे हार्ट में ना बोला भगवान ने ऐसा कि भाई ये तो गलत बात हो जाएगी, O2 और CO2 को मिक्स नहीं होना चाहिए, तो लेट अस मेक 4 चैम्बर्स। फिर 4 चैम्बर्स बनाया, तो द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। पीपल, द 2 अपर चैम्बर्स, जो 4 चैम्बर्स है, ऊपर के दो चैम्बर्स है, मतलब इनको बोल लो कि एक होटल है जिसमें 4 रास्ते हैं, ऊपर के जो 2 रास्ते हैं वो आपके एट्रिया हो गए, ठीक है, वो आपके एट्रिया हो गए। और सिंगुलर मतलब सिर्फ एक एट्रिया, उसको क्या बोलेंगे, एट्रियम। आपका एट्रिया तो प्लूरल है, बट एट्रियम, बहुत सारी एट्रियम मिलके क्या आपके एक एट्रिया बनाएंगे। लेकिन आपका जो एक एट्रिया है, अगर वो जो आपका एट्रिया है वो एक नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा होगा। सिंगुलर प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। Now guys, okay, now moving on, and the 2 lower chambers are called ventricles। आप ऊपर वाले रूम का तो हमने नाम डिसाइड कर दिया एट्रिया, और नीचे वाले जो 2 कमरे हैं उनका नाम होगा पीपल वेंट्रिकल्स। उनका नाम होने वाला है वेंट्रिकल्स। द नेम्स आर गोइंग टू बी वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स help to avoid mixing up। and now what is going to be happening here, so the chambers, there are 4 rooms we talked about, right? We are taking as it is a hotel having 4 ways, having 4 rooms. Now those rooms are separate, this room is separate itself, this room is separate itself, they are having partition, this room is separate itself, this room is separate itself,
what is going to happen? So the blood rich in carbon dioxide and the blood rich in oxygen is not gonna mix. Okay, they are not gonna mix. Now if they will not mix, so this is the best thing that can ever happen. So that really, it's a really logical, but of course the best one. Now guys, next thing is, what is हार्ट बीट? हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हार्ट बीट के बारे में नहीं पढ़े. बोलते हैं ना कि माई मॉम एंड डैड आर माई हार्ट बीट, आई कैंट लिव विदाउट देम. माई मॉम इज़ माई हार्ट, माई डैड इज़ माई हार्ट बीट. सो हार्ट बीट होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन क्या हो सकता है? So the definition for heartbeat can be the rhythmic contraction and relaxation of heart muscles that produce a specific sound of dub 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 that comes out of your heart, right? Is called heartbeat, people. This is known as heartbeat. Okay, so what is heartbeat? Again, the rhythmic sound that is coming out of your heart, okay, due to the relaxation contraction of heart muscles, that is your heartbeat. Now, heartbeat can be heard by an instrument called as stethoscope. Now, this is an instrument known as stethoscope. A stethoscope. अब कोई भी किसी भी बच्चे को any child who wishes to be a doctor, सबसे पहला ना उसका एक ही एम होता है कि मैं एक ही एम होता है कि मैं ना स्टेथोस्कोप पहनूँ, मैं ना स्टेथोस्कोप पहन लूँ, because it's such an amazing thing, है ना. So what is a stethoscope? Look here, people. A stethoscope is having a tube here, a chest piece here, and here is a earpiece that the doctors are going to insert in their ears and check out whether the patient is fine, whether the heartbeat of the patient is fine or not. So this is what exactly a stethoscope is. अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो तो कभी ना कभी तो सपना देखा ही होगा एक स्टेथोस्कोप को पाने का. What happened, you know, when I was in class 7, actually when we were studying this chapter, so when I was in class 7, I was studying this chapter. While I was studying this chapter, my teacher said to the entire class to do a project on a DIY stethoscope. That guys, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. The tutorial, the entire procedure is given, so you guys can make it at home. That's super easy, super amazing. Like when I made it, I was able to hear my heartbeat and others as well, and it felt really good. Like I took a funnel, balloon, pipeline, nothing else, and that was really awesome, people. You guys must also try that. And yeah, moving on, people. From childhood only, since childhood, I love DIY art and craft. Now, the excretory system. Now, guys, we have learned everything about the circulatory system, all the parts of the circulatory system, in fact. Now, let us move on and learn about the excretory system because we need to learn more. Now, here it goes. Excretion in animals. सबसे पहले ना, हम लोग excretion in animals we are going to learn, but थोड़ा सा recall कर लेते हैं, थोड़ा सा introduce कर देते हैं इस concept, इस topic को. So recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. When you are exhaling, अच्छे से सांस अंदर लो, फिर सांस बाहर निकालो. Just inhale and exhale. What is going to happen with you? When you exhale, people, you are going to exhale carbon dioxide. That is CO2, not good at all for your body, but your body produces it, and then plants are going to take that, है ना. And कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. बट गाइस, आप ही तो प्रोड्यूस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को. सो नाउ योर लंग्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. मतलब ऑक्सीजन का यूज़ किया, अब भाई अच्छी चीज़ अंदर गई तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसका बना लिया फाइनली. फिर बोला कि अब हम लोग अपने बॉडी में इसका क्या करेंगे. एक्चुअली प्लांट्स नीडेड, बिकॉज प्लांट्स ने हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो हमारा भी फंड बनता है ना कि जिसने हमारी हेल्प की हम उसकी फिर से हेल्प करें. सो दे सेड लाइक ओके, इफ प्लांट्स हैव हेल्प्ड अस देन लेट अस आल्सो हेल्प प्लांट्स. तो उन्होंने बोला ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, also recall that the undigested food is removed during digestion. Now ingestion और digestion आपने क्लास 7 में ही पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में. ingestion and digestion. ingestion means taking in your food, digestion means taking out of your body, people. Here it goes, very simple, right? I know guys, आप लोगों को भी ये चैप्टर बहुत सिंपल लग रहा होगा with such an amazing session. Let us now find out the other waste materials are removed from the body. अब यही सब प्रोसेसेस थोड़ी हो सकती है, और भी तरह से, लाइक स्वेटिंग से भी निकलता है. एंड ठीक है, सो स्वेटिंग एंड द वेस्ट प्रोडक्ट दैट यू टेक आउट ऑफ योर बॉडी, लाइक व्हेन यू गो पॉटी, व्हेन यू गो टू, यू नो, व्हेन यू release urine. So that is
also a waste product only coming out of your body, and that also is involved in excretory system. You may wonder where this unwanted materials come from. अब आप सोचे होंगे कि मैं भाई यूरिन भी जाती हूँ और जाता हूँ, आई इवन गो टू डू पॉटी, बट यार ये मेरे बॉडी में आया कहाँ से? वाई इज इट सो? हाउ डज इट एक्चुअली एंटर्ड माई बॉडी? सो वो भी पढ़ लेते हैं, चलो. When our cells perform their function, certain waste products are released. अब cells तो हैं भाई, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे आप घर पे बैठो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करने, तो आप किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो? आर्ट एंड क्राफ्ट का. लेकिन भाई कुछ तो गंदा आप छोड़ ही दोगे, ठीक है. कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब आपने पेपर कट किया उसमें कुछ वेस्ट रहा, फिर आपने ग्लू में थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, ये चीज़ वो चीज़, थोड़ी सी कटिंग्स मारे, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना सेम सेल्स के भी होते हैं. सेल्स जब कोई फंक्शन करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं. नाउ these products are released, फिर वो रिलीज होता है. now these are toxic and hence need to be removed from the body. अब भाई ये टॉक्सिक है, नॉट गुड फॉर अ बॉडी एट ऑल, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर पेपर को आप घर पे रखोगे तो टॉक्सिक हो ही जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर तो मम्मा आपके पीछे आ गई बेलन पकड़ के. तो इसीलिए ना इससे बच के रहना. तो आपके जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करते टाइम ना आपको टॉक्सिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, बाहर फेंक देना होता है. वैसे सेल्स को भी करना होता है अपना फंक्शन करते टाइम कि टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकाल देनी, तो उनकी भी मम्मा बेलन लेके आ सकती है ना, इसलिए. From the body, the process of removal of waste produced in the cells are the living organisms is called excretion. और इसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चा लोग excretion. ओके, दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज योर एक्सक्रीशन. सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी. मतलब अगर हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं तो जितना भी कचरा वेस्ट हो रहा है वो हम लोग अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि घर में रखेंगे तो टॉक्सिक बन जाएगा. टॉक्सिक कैसे? मम्मा बेलन लेके आ जाएगी, तो हम लोग बाहर फेंक रहे हैं तो एक्सक्रीट कर रहे हैं उसको, और ये हमारी बॉडी में हो गया. तो रिलेट कर पा रहे हो ना इसको? द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और एक्सक्रीशन में जितने भी पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी पार्ट्स आपके बॉडी के, वो एक साथ मिल करके ढेर सारे ऑर्गन्स बनाते हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ लेते हैं. भाई ह्यूमंस में कैसे होता है एक्सक्रीशन, थोड़ा डिटेल में जानते हैं ताकि मज़ा भी आए पढ़ने में. नाउ द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. हाउ कैन दिस बी डन? अब भाई जो भी वेस्ट है हमारे बॉडी में और ब्लड में, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में है, हम लोगों को तो भाई उसको बॉडी से निकालना है, क्योंकि वो टॉक्सिक बन जाने वाला है. सो भाई ये करे कैसे? हाउ वी हैव टू एक्चुअली डू इट? A mechanism to filter the blood is required. Now here it goes about mechanism. You need a mechanism to filter the blood. And how actually it is done? So this is done by blood capillaries in the kidneys. So this is done using the blood capillaries in your kidneys. अभी capillaries के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, in which the exchanges take place. Now this is blood capillaries, ठीक है, the capillaries of blood. And then guys, in the kidneys, they are situated or located in the kidneys. When the body reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful products. Now, जब ये blood ना आपके दो kidney, you guys have two kidney in your body. Now, when it is going to reach the both kidneys, अब आप ही बताओ मुझे, आपके कोई फ्रेंड्स हो गए या फिर आप खुद को ही ले लो, आप पूरे बहुत अच्छे हो क्या? You guys are totally good. अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, बट ना कुछ बैड साइड तो होती है. चांद की भी एक बैड साइड है ना, चांद की भी एक ब्लैक साइड होती है, उसी तरह हमारी भी एक ब्लैक साइड होती है. मतलब हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं. उसी तरह पीपल इसमें भी है, जब ब्लड हमारी किडनीज तक पहुंचता है उसके वो यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है. वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि पूरा ही मतलब हम बता नहीं सकते कि पूरा ही यूजफुल है, बिल्कुल भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है. नहीं, यूजफुल है, पूरा नहीं, कुछ पोर्शंस उसमें हार्मफुल भी होते हैं. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड. अब हमारा ब्लड कितना अक्लमंद है, उसको पता होता है कि these substances are useful while these substances are harmful. So this is going to, the blood is going to absorb the useful substances or useful substances. Okay, the wastes dissolved in water are removed as urine. Now the waste that is going to be removed through the urine that you do, people. Yeah,
the urine. So where does urine actually come from? So this is the process from which actually your urine comes from. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder. Now ये urine kidney से जाके फिर urinary bladder पे जाएगा. And then what is going to happen? Through tube-like ureters, Ureters are those tube-like structures that are going to transfer your urine. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary openings at the end of muscular tube called urethra, and that is going to be end of muscular tube. Guys, we are going to understand this in even detail through a figure. Okay, the kidneys, uterus, bladder and urethra form the excretory system. These are the organs in our body which are going to form the excretory system. Now, transport of substances in plants. Now, in plants, how is the transport of substances going to take place? So, plants absorb water and minerals by the roots. They are going to absorb all the water and minerals by the roots. The roots have root hair. The root hair increase the surface area of the root for absorption of water and mineral nutrients dissolved in it. अब भाई अगर आपके पास एक ही स्टिक है और उसी एक और सेकेंडली आपके पास एक स्टिक है जिसमें छोटे छोटे और भी ज़्यादा ब्रांचेस है, तो कौन सी बेटर रहेगी? कौन सा, मतलब अगर आप बोलो कि आपको उसको जलाना है, यू गाइज हैव टू बर्न इट, तो कौन सा ज़्यादा जलेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा? ऑफ कोर्स ये वाली, क्योंकि ये इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा है देखने से. तो उसी तरह सेम अगर ज़्यादा रूट्स हेयर भी होंगे तो वो भी हेल्प करेंगे. तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन अच्छे से एब्जॉर्प्शन विल बी एबल टू टेक प्लेस इवन बेटर in a better way. Now next what is going to happen, the root hair is in contact with the water present with the soil particles. Now it is going to be always in contact. Plants have pipe-like vessels to transport water and minerals from the soil. These plants are having pipeline vessels, people. अब है ना, अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स तो होने ही चाहिए. नाउ गाइस, व्हाट आर प्लांट्स डूइंग? डू यू नो दे हैव अ वैस्कुलर टिश्यूज. दे हैव अ वैस्कुलर टिश्यू known as xylem. Xylem is a vascular tissue that is going to transfer water from one place to the other. Means from one place to the other means from the roots to all the parts of the body, people. So the xylem is the vascular tissue that is used for the transport of water, nutrients from the in the plants. Okay, so this is your xylem. Now guys, moving on, transport of food and minerals. अब भाई पानी को तो xylem, पानी की जब बात आती है तो xylem is like I will handle it. But then जब बात आती है खाने की, मिनरल्स की, then ना उसका बेस्ट फ्रेंड, जाइलम का बेस्ट फ्रेंड फ्लोएम आता है. इट इज़ लाइक जाइलम तुम थक जाओगे काम करके, लेट मी टेक सम जॉब. सो फिर वो बोलता है ठीक है तुम पानी करो, मैं फूड एंड मिनरल्स करूँगा. फ्लोएम सेज दैट तुम पानी करो, मैं फूड एंड मिनरल्स का काम कर लूँगा. सो फ्लोएम आपका क्या करता है, फूड एंड मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. अब गाइस लास्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर में वो है ट्रांसपीरेशन. बिकॉज हमने इस चैप्टर को वी हैव स्टडीड द एंटायर चैप्टर विद सो मच ऑफ फन, विद सो मच ऑफ बूस्टर्स एज वेल. ठीक है, सो ताकि आपको याद रहे, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज एज वेल. Now transpiration, the excess water reaching the leaf through the rows of cells is thrown out through stomata. क्या होता है, जो भी ज़्यादा वाटर होता है वो आपके स्टोमेटा से बाहर निकलता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. Guys, do not forget to attempt the mega quiz 2 that is going to be held on the 9th of November. Okay, it is going to be held on the 9th of November. And guys, last submission date और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो जाने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें मेगा क्विज 2 के ऊपर, और लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्राइब का बटन पूरा ऐसा रखना है आपको. एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. रियली आई नीड योर सपोर्ट अ लॉट. गाइज मेगा क्विज 2 ज़रूर अटेंड करना. एंड गाइज विद दैट नोट मेगा क्विज 3 आएगा, मेगा क्विज 4 भी आने वाला है. तो उन सब के लिए ये चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना बिकॉज ये चैप्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे. Guys, so here it goes. We have ended up with the entire session. I hope you guys have enjoyed this session a lot. And if you did enjoy, then do not forget to hit on that like button, subscribe to my channel and share this video. Do not forget to tell me in the comments below how was the session, and let's meet in our next video. Till then, take care, tata, and bye bye.